बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students. In today's video inshallah we will try to cover up exercise 1.4 जी ये 11th class की आपकी book है, that is model textbook of mathematics. It's from federal book that is changed, a new course. So we are going to start it, and if you have any problem regarding any topic, any problem regarding mathematics, then you can let me know in the comment section. I will answer you, okay, inshallah. So question number 1 is write it polar form. Polar form आपके पास बेसिकली होती क्या है? ये जो x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म होती है ये बेसिकली हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है, और जब हम इसे थीटा इंटू आर में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म होती है. ओके, सो नाउ हम इसकी डेरिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे बिकॉज वी हैव टू डू अ whole exercise ahead. If you have problem regarding derivation of this, you can let me know in the comment section. मैं फिर आपको उसकी जो है वजाहत कर दूँगी. अब यहाँ पर हमारे पास है कि आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है. तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको आगे से वी नो दैट आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है. ये हमारे पास आर जो है वो बेसिकली इसका फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है. अब पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे पास एक तो हमें आर चाहिए होगा, सेकेंडली हमारे पास थीटा चाहिए होगा. थीटा बेसिकली होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जी. जी इज़ बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमारे पास होता है थीटा, ठीक है. थीटा हम जब भी फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास एक और एंगल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और वो एंगल हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से, जो कि हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स पाई बाय एक्स होल मॉड. मॉड क्यों है? मॉड इसलिए है क्योंकि ये वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास एक और बात इसमें आ जाती है थीटा की, कि थीटा के लिए हमें अल्फ़ा क्यों चाहिए होता है. इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द ग्राफ. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है. तो इस ग्राफ में आपके पास होता यह है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें अल्फ़ा और थीटा दोनों की वैल्यूज़ इक्वल होती हैं, ठीक है. अब सेकंड, इन द सेकंड क्वाड्रेंट व्हेन वी मूव ऑन वी हैव दिस दैट पाई माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा. This is basically the rule. And in the third quadrant, theta would always be equal to minus pi minus alpha. That is equal to minus pi plus alpha. Okay. And in the fourth quadrant, theta would be equal to minus alpha. For this exercise, you have to keep these things in your mind. Okay. So come to the question. Write in polar form. The first one is 2 plus iota 2 into square root of 3. Okay. So now how will we will first assume that z equals to 2 plus iota 2 square root of 3. This is what we are assuming, that this is the z. Okay, if this is the z, then x would be 2 and y would be 2 square root of 3. Why? Because x is always the real part of any complex number, and y is always the imaginary part of it. So here it is x is 2 and y is 2 square root of 3. For finding r, what will we do? We will square them. We will square 2 plus we will square 2 square root of 3. If we square these both, square of 2 will give us 4, and square of this square will apply on both of them. When it is applied on this 2, it will give 4, and when it is applied on this square root of 3, square root and 2 will be cancelled, and we will be left with only 3. Now square root of 4 plus this is square root of 4 plus 4 into 3. 4 into 3 is basically 12. So 12 plus 4 is 16. This is 16, and square root of 16 is 4. Okay, so our answer for r is what? 4. Okay, now that we have found out r, now we will move towards alpha. What is alpha? Alpha is tangent inverse y by x. As the both of the values are positive, there is no need of putting mod on it. So it's 2 square root of 3 divided by 2. 2 and 2 will be cancelled. Then it's tangent inverse square root of 3. What will it give us? And how will we take it from the calculator? Press the shift button. Then tangent inverse
then square root of 3 equals 60. So you can see that this is 60, okay? Here on the calculator, it is 60. So it can be multiplied with pi by 180 to make it into radians. 0 and 0 will be cancelled. 6 into 1 is 6. 6 into 3 is 18. So it's pi by 3. What is alpha? Pi by 3. Now that we have find out alpha, we need to go further to theta. Okay. For theta, what will we do? For theta, we need to find out that in which quadrant do it lie. So they both are positive, x and y both are positive, so it lies in the first quadrant, and this alpha and theta both are equal according to this. Now we need to transfer this whole complex number to polar form. That is r, which is r 4, okay? Then this is bracket, then this is cos pi by 3 plus iota sine pi by 3. Okay, this is now the polar form. We can further write it as 4 cos pi by 3 plus 2k pi plus iota sine pi by 3 plus 2k pi. I have written it with plus 2k pi. Why I have written it like this? क्योंकि 2k pi पीरियड होता है cos और sin का. ठीक है, अब 2 पाई तो पीरियड होता है cos sin का, लेकिन हमने k क्यों ऐड किया? क्योंकि k डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ पीरियड्स को. मे बी नंबर ऑफ पीरियड 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी हो, तो वो हम k के अंदर इंसर्ट करते जाएंगे वो नंबर. ठीक है, एनी आर्बिट्रेरी नंबर के लिए k का साइन आ गया. ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर द पार्ट नंबर 1. नाउ मूव टुवर्ड्स द पार्ट नंबर 2. 3 minus iota square root of 3 is the part number 2. Now here we have x as 3 and y as minus square root of 3. See, there is a minus sign here. Okay, further what will we do? We will first find out r. R is the square root of x square plus y square. So it can be written as x square is 3 square and y square is minus square root of 3 square. Further, when 3 square is 9, and this square root and square will be cancelled, and this minus sign is positive. Why? Because the square, the even power, will make the negative sign always positive. So it's plus 3 and then it will be 12. Okay, in rough I will tell you that whenever there is square root of 12, it can be written as 4 into 3 and it can be splitted, then 4 into square root of 3 and then square root of 4 is 2, so it's 2 square root of 3. Here we have 2 square root of 3 as an answer for r. Okay, this is our r. Okay, now for theta and alpha. First I need to find the alpha. This tangent inverse mod of minus square root of 3 divided by 3. Okay, mod will make the negative positive, so it would be square root of 3 divided by 3. There is no need to write the mod again. Okay, so it will be tangent inverse square root of 3, and it can be written as double times square root of 3 because whenever they multiply they became square again, so square and square root cancel each other and we will be left with only 3. That's why it can be written as this. Now it would be cancelled. Okay, it will be cancelled and we will be left with tangent inverse 1 by square root of 3. Okay, if you want to do it directly on calculator, it's not impossible. You can do it same as I have done it before, 30 degree. But we don't want this 30, we want to shift it into the radians. So cut this 0 with 0.
3 into 1 is 3 and 3 into 6 is 18. So the answer is pi by 6. Now we need to know that what is the rule for theta. Now that we have find out r and theta, we will move towards the polar form. Right, polar form. Our polar form will be r, that is 2 square root of 3. Then we have to put the bracket, then cos this angle minus pi by 6, then iota, then sine, then minus pi by 6, the same angle. Put the square bracket. Now cos always makes the negative into positive, so write cos pi by 6, but sine cannot do it. It's minus iota sine pi by 6. Okay, so further, if you want to make it in an organized way or so, you can also write it as cos pi by 6 plus 2k pi or 2n pi minus iota sine pi by 6 plus 2k pi. Okay, so this is the answer for part number 2. We have to look at where x is positive and y is negative. There x and y both are positive. See, this is x-axis, this is y-axis, so both are positive. So this is not the case. This is, in this case, this is x negative because it's on the number line, it's going in this direction. X-axis is negative and the y is positive, so this is not the case. Here x is negative and y is positive, but this is not the case. We have a case in which x is positive and y is negative. So this is the case in which x is positive, because see, in the fourth quadrant x is positive, this is positive number line, and y is negative, y-axis is negative, it's down. Okay, so this quadrant we are dealing with, and in this quadrant theta is equal to minus alpha. Like we have alpha is pi by 6, so in case of theta would be minus alpha, that is minus pi by 6. This is what we are going to highlight it. Our part number 3 is minus 2 minus iota 2. Here we have x as minus 2 and y as minus 2 again. So what would be the r? R would be minus 2 square plus minus 2 square, because x square plus y square, no, that's why. So it would be minus always is positive when the power is even, so it's 2 into 2 is 4 plus 4, that is 8. It can be further written as 4 into 2. 4 into 2 is, this square root of 4 is 2 and it's 2. Like I am telling you another step, split the square root separately on both of them, then this square root of 4 will be turned as 2 and this square root of 2 will be remaining. So our r is this. Okay, now for the second one is alpha. For alpha, this is tangent inverse mod of y over x. This is our alpha. So now we have to put the values in it. Y is minus 2 and x is also minus 2. This makes the negatives positive. So it would be tangent inverse 2 by 2. 2 and 2 would be cancelled. Tangent inverse 1 is 45, and if you don't know how to find it on the calculator, you have to see the previous part 1 and part 2 videos. Now you have to multiply this 45 with pi by 180, because we are going to transfer it into the radians. Okay, so 45 divided by
180 will give you 4. 45 into 1 is 45, and 45 4 into 4 is 180. Alpha is equals to pi by 4. This is our alpha. For x and y, when both are negative, so it would be the quadrant third. For third quadrant, the condition is that theta would be equals to minus pi plus alpha. Sorry, minus pi minus alpha. So it would be minus pi, minus into minus is plus alpha. Okay, so write minus pi plus, what is the value of alpha? Pi by 4. The denominators are not the same, it's 1 here. Okay, so if you want to make it same, we'll multiply these both with 4. Okay, so it would be minus 4 pi divided by 4 plus pi divided by 4, and then we will have theta equals to minus 3 pi divided by 4. Okay, that would be our theta. Our polar form is r cos theta plus iota sin theta. So r is 2 square root of 2, and cos and theta is minus 3 pi by 4 plus iota sine minus 3 pi by 4. Okay, so further it can be written as cos 3 pi by 4 minus iota sine 3 pi by 4. Okay, this is the way to write. And if you want to write it in a more general and specified way, it's a specified one, and now we are going to write it in the general way. Plus 2k pi minus sine 3 pi by 4 plus 2k pi. Okay, why I am writing this 2k pi with it? Because this is the period of cos and sine, so I have to add it. Part number 4 is iota minus 1 divided by this, and we are going to transfer this all with the values. Like we have to put the values instead of these. Cos pi by 3 is equal to 1 by 2, and sine pi by 3 equals to square root of 3 divided by 2. This whole is going to divide it by 1 plus iota square root of 3 divided by 2. Okay, this whole is divided by this whole. Now I want to change the sign, this divide into multiply. Then what will I do? Iota minus 1 multiply by 1 plus iota square root of 3 would be in the denominator, and this 2 would be in the numerator. Okay, so this iota minus 1 would multiply with 2, and it would be divided with 1 plus iota square root of 3, like this. 2 will be multiplied with iota minus 1, and in the denominator we will have 1 plus iota square root of 3. Okay, so now that we have iota in the denominator, we will rationalize it by multiplying and dividing with 1 minus square root of 3. Iota when multiplied with these two, iota minus iota square root of 3. Now multiply this minus 1 with these two. Minus 1 minus into minus is plus iota square root of 3. Okay, and look in the denominator, it's a plus b, a minus b, and it will take the form a square minus b square. This iota square is always minus 1, so it always change the sign. Okay, iota square will change it into positive square root of 3, then minus 1, then iota square root of 3. In the denominator we will have 1,
then this square will apply on these both. It will cut from this, square root will cut from here, and iota square will make it -1, minus and minus will plus. I will write it as this. Now in the rough I will tell you what is going on. Iota square into square root of 3 square, it will cut, so it will be 3. Iota square is -1. Okay, so there is a minus outward, so minus and minus will be plus, is 3. Okay, and 3 plus 1 will be 4. Iota and iota square root of, iota taking common, so 1 plus square root of 3. From here I have taken iota out, it would be 1, and from here I have taken iota out, then square root of 3 would be left. The second term is square root of 3 minus 1. This is 4. 2 into 1 is 2. 2 into 2 is 4. Okay. So now look here that this is a real part, square root of 3 minus 1 divided by 2. This is a real part. This 2 is going to be divided with both of them, with the imaginary part and as well as the real part. Plus iota into 1 plus square root of 3, the whole divided by 2. Okay, well now that we have find out this, now we will take the, because this is x and this whole is y, not including iota. Now we will find out r. Now I'll take the square square formula, a plus b whole square formula, and here a minus b whole square formula, which is equal to a square plus b square minus 2ab. I will write it here. And if it's positive, then this all would be positive. So this is negative, so it would be square root of 3 square plus 1 square minus 2 into square root of 3 into 1. But there is no need of writing 1 because 1 into 2 is always 2. Here 1 square plus square root of 3 square plus 2 into square root of 3. Again I am not writing 1. In the denominator it is 2 into 2 is 4. Again 2 into 2 is 4. Okay, now some of the students will say that we will write 8. No, we will not write 8, because, and not even 16, because it's not multiplying. These both terms are adding up. So whenever there are two terms and they are adding in the denominator and the denominator are same, then we have to pick up the 1. Okay, the 1 number from the denominator. Okay, so this square root and square will be cancelled. Here it would be cancelled, and minus 2 square root of 3 plus 2, that would be also cancelled. This 1 square is always 1, so 1 plus 1 would be 2, plus this 3 and this 3 will make it 6. And this square root is applying on both the numerator and the denominator. When it is applied on the denominator, square root of 4 is 2. So now square root 6 plus 2 is 8. I have already told you that square root of 8 can be written as 2 into square root of 2. So it is 2 into square root of 2 divided by 2. That will be cancelled. And square root of 2 equals to r. That would be the value for r. Okay. Now we will find out r alpha. Alpha is basically always equals to tangent inverse y over x
And in that case, we have, I'll show you the values. We have this x and this y, so these both are positive, so we don't need to write the mod. Tangent inverse y is 1 plus square root of 3 over 2, and the whole is going to be divided with square root of 3 minus 1 divided by 2. Okay, as the both have same denominator, it will be cancelled. So here we will come up with tangent inverse 1 plus square root of 3 divided by square root of 3 minus 1. Okay, so we can get this value from the calculator directly. I'm going to do that. Press this button, okay, the shift button, then press tangent button, and you will have this icon in the calculator. Sorry. Okay, so now in the numerator you have to write 1 plus square root of 3. In the denominator you need to write square root of 3 minus 1 minus 1, then close the bracket and press equal sign. Then you will have 75 as in your answer, but it is in degrees, so you need to multiply it with pi by 180. Okay, and when you multiply it with pi by 180, you have 5. Let me multiply it. 75 divided by 180, that will give you 5 by 12. So it's 5 pi by 12, that is alpha's value. This is alpha. As both of the values are positive in this case, so theta, this is the quadrant first, and in the first quadrant theta is always equals to alpha, so theta is also equals to 5 pi divided by 12. Okay, so now we need to write this in the form that they want us from, polar form. Okay, in the polar form, r is square root of 2, right? Square root of 2, and then in the brackets you have to write cos 5 pi by 12 plus iota sine 5 pi by 12, close the brackets. So this is our answer. Okay, so now move towards the 2 is write the complex numbers in the rectangular form. The first one is this, so let's start it. This is part number 1, cos pi by 6 plus iota sine pi by 6 into this. Okay, and we have to change it into the rectangular form, that is x plus iota y form, the normal form, and it is basically written in the polar form. So all we need to do is to take out the values of cos pi by 6, sine pi by 6, and that all. The cos pi by 6 will give us square root of 3 divided by 2, and iota sine pi by 6 will give us 1 by 2. Okay, and here cos pi by 3 will give us 1 by 2, and iota and sine pi by 3 will give us square root of 3 divided by 2. If you don't know the values directly, you have not learned it, then you can use the calculator on the same way that I have described earlier in video. Okay, so now we have to take this 1 by 2 common, and we will be left with square root of 3 plus iota. Iota into 1 is iota, that's why. Here, from here, 1 by 2 is also common. Left with 1 plus iota square root of 3. Okay, so now 1 by 2 into 1 by 2 is 1 by 4. It's going to be multiplied. It's a multiplication sign. When there is no sign in the brackets, it means it's multiplication. Is square root of 3 plus iota into 1 plus iota square root of 3.
This is 1 by 4. When these both values multiplied with 1, it will be the same. When this square root 3 multiplied with this will be iota into square root of 3 square. When this iota multiplied with this, it will be iota square root of 3. Now cut this square root and square. Then we will be left with 1 by 4. This is iota square and it will change the sign. Okay. The square root of 3 plus iota. This is now 3 iota. This is minus square root of 3. These both will be cancelled. It will be 3 iota plus iota. That is 4 iota. It will be cancelled. So the answer is iota. So it is changed into the polar form. Okay. Now we have the second part. Part is cos pi by 6 minus iota sin pi by 6, and this all we need to transform in to the radians. Cos pi by 6 is square root of 3 divided by 2. Sin pi by 6 is 1 by 2. This whole is going to be divided with 2 into cos pi by 3 is 1 by 2, as we have done it in the previous question as well. Sin pi by 3 is square root of 3 divided by 2. Okay, so this is the question, and now we have to write it further. We have to take this common. I will take it here 1 by 2 common from here. It will be square root of 3 minus iota. Iota into 1 is iota. In the denominator, okay, no, should be here. In the denominator, 2 is already written. 1 by 2 is taken out. Then we will be left with 1 plus iota square root of 3. Okay, 2 and 2 are cancelled. Okay, so now in the next step, we will have 1 by 2 square root of 3 minus iota, and in the denominator 1 plus iota square root of 3. Okay, this is how we will write it. Now we will multiply with, like, rationalize it with 1 minus iota square root of 3. 1 minus iota square root of 3. Okay, so when this whole will multiply with 1, there would be nothing would be changed. This, when multiplied with this, will give you minus iota square root of 3 square, and minus iota when multiplied with this, they both are negative, so sign will be changed to positive. Iota into iota will make it iota square and square root of 3. Okay, this is how we will write it. The denominator is completing the formula of a plus b, a minus b, that is a square, 1 square is 1, minus b square. Now this will be cancelled. This iota will change the sign. This will be square root of 3 minus iota. This would be minus 3 iota. This would be minus square root of 3. The denominator will have 1. This iota square will change this sign and it will be cancelled. In the next step, we will have 1 by 2. Okay, and these both will cancel. It will be minus 4 iota divided by 4. It, when multiplied here, it will be minus 4 iota divided by 4 into 2, that is cancelled. So what would be our answer? Our answer would be minus iota by 2. So this is the answer for part number 2. We have to look for question number 3.
Question number 3 is, if this is the case, then show that this equals to this and this equals to this. If you look at this pattern, we are observing that it is some kind of mod. See, if it has the square root, then it completes the form of the modulus of a complex number. So it means that we have to apply modulus on this all equation, and then we have to move further. So we'll write here, as we know, mod of any complex number equals, so applying modulus on equation star. This can be equation star. Since we know that mod of z1 z2 can be written as mod of z1 into mod of z2, so we are going to split this. Now write the formula, and the formula will be x1 square plus y1 square. Okay, so it will take this form, and now as it is multiplying, like whenever there is a square root on 2 and square root of 3, we can write it combinedly like 2 into 3. So this is the case which we will do here. We will apply the square root whole and putting all of the values together, and now we are going to square it. When we square it, okay, you can mention that taking square on both sides. When we take square on both sides, the square root and square will be cancelled, this will be cancelled, and we will have x1 square plus y1 square. So it is proved. Okay, students, so we have question number 3, part number 2. We are going to do this part now, and we are given with this one. Okay, so as we are moving towards it, we need to observe this, that this is the form of the argument of z, argument of a complex number. That is the formula for argument of the complex number. So when we want to take this whole series or this whole expression into this form, we have to apply argument to this whole equation. So first applying argument of z on both sides of given equation. Okay, so this we will apply. We will have this one, argument of this whole expression x1 plus iota y. Since argument of z1 into z2 equals argument of z1 into argument of z2. This is what we have already, the rule. Okay, so we have already this rule, and we have to apply this on this equation. So argument of x1 plus iota y1 okay, so this is the case. Now we have to apply the formula of the argument. Okay, that is tangent inverse y1 divided by x1. Okay, now we have put it in the formula, like the argument of z is basically in this formula. It is from 1 to n. Now we have to put the summation for it, as these all are positive, these all are adding, so we need to put it in the summation form. Summation means sum of the all terms. We will consider it as an r. We'll write tangent y by x r. Why are we writing r? Because if we write 1, it will only represent this term. If we write any other number, it will specifically represent that particular term.
but we want to represent the whole expression, the whole series, so sequence, sorry. So we need to represent it with the r, and in the summation we will give the criteria that from where it is going to start. R is going to start from 1 to n. Okay, so here it is, and this one would be the same. So it is proved. Question number 4, we have the form 1 plus z divided by this and equals to this, and we have to show this. Okay, so for this we have to apply componendo dividend theorem here. Okay, so applying componendo dividendo theorem. Okay, I have to know that it is the theorem in which the denominator is going to add in the numerator and the denominator is going to subtract in the denominator. Okay, and on this side the denominator is only 1, so it will be plus 1 in the numerator and minus 1 in the denominator. I will write it, then you will know how to. 1 plus z in the numerator, 1 plus z in the denominator. ठीक हो गया. Now add 1 minus z and subtract 1 minus z. Okay? Plus 1 here and minus 1 here. 1 would be 2 and this z will be cancelled. In the denominator, 1, yes, I have to take it out from the brackets first. Minus into minus is plus z. This side would be the same. We are not touching it right now. Now this 1 and 1 will be cancelled. In the denominator we'll have 2z. This and this will be cancelled. We'll have 1 by z. Now as I want to take the reciprocal, then this z will be shifted up and this whole will be denominator will turn into numerator and numerator will turn into denominator. Okay. Now these are double angle identities. Before doing this, before simplifying it, you should know some things, some formulas. The first formula which you need to know is basically this one is the formula which you all are familiar with. Cos 2 theta, equals to cos square theta minus sin square theta. We are going to derive the other identities from this identity. When I want to find out this cos value, then what will happen? This will be cos square 1 minus sin square. Okay, from this formula we have derived this. Now I will put this value here, 1 minus sin square theta minus sin square theta. It will be 1 minus 2 sin square theta. This is double angle identity for cos. Now again cos 2 theta. For sin, it would be 1 minus cos square. So it is cos square theta minus 1, minus into minus is plus cos square theta. Cos square theta plus cos square theta is 2 cos square theta minus 1. Okay, so this is the second double angle identity. Okay, apart from this, you should know this one, and these two. And double angle identity for sine is 2 sine theta into cos theta. Okay, so you should know these all formulas for applying on this question. Okay,
So let me do it right now. We want, because we have to prove tangent theta, so we have to take it in the form of sine by cos. Okay, now we are going to change it into the form in which sine is in the numerator and cos is in the denominator. Instead of this cos 2 theta, I will write 1 minus 2 sine square theta. I have told you the reason why I am using sine, because I want to make it in the form in which sine is in the numerator. Instead of this cos 2 theta, I will use this 2 cos square theta minus 1 plus iota sine 2 theta plus 1. This will be cancelled, this will be cancelled. So we will be left with, okay. Now check that instead of this sine 2 theta, I will write 2 sine theta cos theta, and in the denominator again, instead of this, I will write 2 sine theta cos theta. Now in the next step, I will take common 2 as well as sine, because 2 and sine both are in the both of the terms. 2 sine theta. So we will be left with minus sine theta plus iota cos theta. Okay, in the numerator. In the denominator, we will take out 2 cos theta. 2 cos theta. We will be left with cos theta and plus iota sine theta. Okay, so now this 2 and 2 will be cancelled. This sine and cos will change it into tangent theta, and this one minus 1 is always equal to iota square. So instead of this minus, I am writing iota square. I am writing iota square, and this here I will write cos theta plus iota sine theta, and it can be written as, when I take iota common, then it would be, this would be left with cos theta, this would be left with iota sine theta. In the denominator, it is already cos theta plus iota sine theta. So they both will cancel and we will be left with iota tangent theta. So it's proved. Okay. Question number 5 is, if this is the expression equals to 0, show that this and this equals to this. Okay, for this we need to apply Euler's identity first. What is Euler's identity? Euler's identity, or its rule, you can write it cos alpha plus iota sine alpha is equal to e power iota alpha. This is alpha, and instead of alpha we can write any angle. Okay, so we are supposing, let a equals to e power iota alpha, b equals to e power iota beta, c equals to e power iota gamma. Okay, first we have supposed this. Now we will move further, adding this ABC. We can open up in the form of this cos alpha plus iota sine alpha plus cos beta plus iota sine beta plus cos gamma plus iota sine gamma. We have to write it in the real and imaginary parts separately. This one, and this one is the real part, and these are with the imaginary, these are with the iota, so we have to take the iota common, and this would be left with sine gamma. Okay, so this is how we know from the given expression that these all are 0.
So it took the form 0 plus iota 0 is equal to 0. Next we will apply the cube formula on it. A plus b plus c whole cube equals to 0. A plus b plus c whole cube is basically equals to a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Instead of this a, b and c, we will put these values plus e power iota beta cube plus e power iota gamma cube, and we will shift this whole to the other side. This would be 3abc. Now when this power will multiply with this, it will give you e power iota 3 alpha, e power iota 3 beta plus e power iota 3 gamma. Instead of this ABC, we will write e power iota alpha, e power iota beta, and e power iota gamma. Yes. Know the rule that whenever the base is same, the powers can be added. So we are going to add them up. Now that we have added them, we can take iota common. We will be left with this. On this side, we will open this up in this part, e power iota 3 alpha. This is the angle. 3 alpha is the angle, so we'll write cos 3 alpha plus iota sine 3 alpha plus gamma equals 3 into this. Now the angle is alpha plus beta plus gamma. Now we will write it cos alpha plus beta plus gamma plus iota sine alpha plus beta plus gamma. Okay, so now it is, now you have to take again the real part first. This is cos 3 alpha, cos 3 beta, cos 3 gamma, plus taking iota from these will be sine 3 alpha, sine 3 beta, sine 3 gamma. Okay, and on this side it will be all the same. 3 cos alpha plus beta plus gamma plus iota 3 sine alpha plus beta plus gamma. Now we will compare the real and imaginary parts separately. Comparing real and imaginary parts separately. What will we have? There we will have cos 3 alpha, cos 3 beta, cos 3 gamma equals to 3 cos alpha plus beta plus gamma. And the second one is imaginary. This is sine 3 alpha, sine 3 beta, sine 3 gamma, which equals to 3 into sine alpha plus beta plus gamma. So from this equation we have proved both of the results, part 1 and part number 2. Question number 6 is write the following complex numbers in algebraic form. We know that algebraic form is x plus iota y form. So let's start it with it. We will use calculator. Scientific calculator will be needed in these all parts. Okay. Cos 315, when you will directly do it on the calculator, it will require just a few steps. I will press cos and then 315 and equal sign, then you can see that the answer is square root of 2 divided by 2. And if you know the values from the table, then that is very fine.
You can use your brain to do these all. Okay. Cos 315 is square root of 2 divided by 2, and sin 315 is minus square root of 2 divided by 2. Now I will take common this 2. We'll be left with square root of 2 plus iota minus square root of 2. Here we can also take square root of 2 common. We will be left with 1 minus iota here, because plus minus is minus, so minus iota will be left here, divided by 2. The square root of 2 and square root, they are 2, so we can write them as this. They both will be cancelled. So we will be left with 2 by 2. 2 by 2 can further be cancelled, and it will give us 1 minus iota as an answer. Okay. So in the second part, we will have cos 210. Cos 210 has a value of minus square root of 3 divided by 2 on calculator, and sin 210 is minus 1 by 2. So now we will take 2 common. We'll be left with minus square root of 3 minus iota. Take minus common. Then here we will be left with square root of 3 plus iota. And this would be our answer. Part number 3 is 2 cos 3 pi by 2 plus iota sin 3 pi by 2. So put the values here. Cos is 0 and iota sin is minus 1. So it is minus iota, means minus 2 iota is our answer. This plus sign is multiplied with this. It will give you minus iota, and then this minus iota is multiplied with this 2, and it gave you minus 2 iota as an answer. Okay students, part number 4 is 4 into cos 5 pi by 6 plus iota sin 5 pi by 6. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, you have to multiply this cos 5 multiply by 180 divided by 6. ठीक है, क्योंकि pi is always equal to 180. ठीक है, here iota sin 5 multiply by 180 divided by 6. सही है, हमने इसको कैलकुलेटर पे किया और हमारे पास आंसर आया 150. ठीक है, ऐसे लिख लेंगे. ठीक है, और अगेन फिर भी आप इसको दोबारा से कैलकुलेटर पे सॉल्व करें और फिर देखें कि आपके पास क्या एंगल आता है. cos 150 आपको देता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, वेयर एज आपको साइन 150 जो है वो क्या दे देता है 1/2. ठीक है, अगर आपको पता ना हो कि कैलकुलेटर पे इसको कैसे जो है वो आप सॉर्ट आउट करेंगे, तो आप मेरी प्रीवियस जो है वीडियो का पार्ट देख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, कि उसमें कैसे हुआ है. अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लें. ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2 इसको कर लें और आपके पास अंदर क्या बचाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा. ठीक है, अब आप देखें 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 2 इज़ 4. तो आपके पास यहाँ पे क्या आंसर इसका आ जाएगा, 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा. ये आपके पास पार्ट नंबर 4 का आंसर. पार्ट नंबर 5 देखें जी, आपके पास है 5 2 cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6. तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं. देखें, पाई की जगह पे 180 और यहाँ पर 6 है, तो 6 1 are 6, 6 3 are 18, 30. तो आपके पास एंगल क्या बन रहा है 30 डिग्री. तो cos 30 डिग्री आपको क्या देता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे हमारे पास sin 30 आपको देता है 1/2. ठीक हो गया. तो अब इसमें हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास, सॉरी मैंने यहाँ कॉस लिख दिया है, देयर इज़ नो नीड ऑफ राइटिंग कॉस क्योंकि हम ऑलरेडी वैल्यूज़ ले चुके हैं. अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास 2 कॉमन आ गया, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे. तो आपके पास क्या होगा लेफ्ट ओवर, स्क्वायर रूट ऑफ 3
प्लस आयोटा। ये आपके पास जी आंसर होगा पार्ट नंबर 5 का। तो आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 6 आपके पास है कॉस 135 डिग्री प्लस आयोटा साइन 135 डिग्री। तो हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर पे ऐसे करेंगे। देखिए मैंने कैलकुलेटर यहाँ पे रखा और मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको। देखिए पहले कॉस प्रेस करें, फिर 135 लिखें, क्लोज करें ब्रैकेट और इक्वल्स का साइन प्रेस करें, तो आपके पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। वेयर एज आपके पास साइन 135 कैसे आएगा, आप डिलीट करें यहाँ से कॉस को और साइन प्लेस करें और आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख सकते हैं कि आप इसमें से कॉमन ले लें जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, -1 प्लस आयोटा आपके पास अंदर बच जाएगा। ठीक है, वेन एवर देयर इज रिटन 2 ओनली यू कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। वाई? बिकॉज इसको जब हम इकट्ठे करके लिखते हैं देन वी हैव this and this can be cancelled and then we will again get this 2. So this 2 is equal to the square root of 2 into square root of 2. यहाँ पर square root of 2 है divided by double square root of 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा और जो दूसरा है वो आपके पास रह जाएगा। तो आपके पास -1 प्लस आयोटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आप इन दोनों के नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे कर दें -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 में आप देखिएगा कि यहाँ पे 10 इंटू कॉस 50 प्लस आयोटा साइन 50 है, तो आप 10 को जो है वो बाहर ही रहने दें और cos 50 को आप कैलकुलेट करें ऑन द कैलकुलेटर, यू विल गेट 0.6427 and instead of sin 50 you will get 0.7660. So these would be the answers and then you will multiply this 10 with this 6.427 plus in this case you will get 7.660 iota. Okay, so this would be the answer for part number 7, and for part number 8 you will have square root of 2 and in the parenthesis you will have, देखिए ये 3 into 180 हो जाएगा, तो 3 into 180 आपको देता है 540। 540 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपको देगा 135। तो दोनों एंगल्स आपके पास 135 हैं। cos 135 देख लेते हैं कि क्या देता है, वो देता है आपको माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। और साइन का भी देख लेते हैं कि साइन 135 आपको क्या देता है, वो देता है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो इन दीज बोथ ऑफ द केसेस यू विल हैव स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन। ठीक है, इसको कॉमन ले लेते हैं लाइक ऐसे। ठीक है, और आपके पास अंदर क्या बचेगा, -1 प्लस आयोटा। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और अंदर आपके पास -1 प्लस आयोटा बच जाएगा। अब आप देखिए इन दोनों को कैंसिल कर दें, देन यू विल बी लेफ्ट विद 2 डिवाइडेड बाय 2। इनसाइड यू विल हैव -1 प्लस आयोटा। अब आप इन दोनों को कैंसिल करें तो आपके पास -1 प्लस आयोटा पार्ट नंबर 8 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पार्ट नंबर 9 और 10 की जानिब जाते हैं। 9 इज़ 4 cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। पहले चेक करते हैं कि 2 पाई बाई 3 आपको किसके इक्वल देता है, 2 इंटू पाई मतलब 2 इंटू 180 जो कि आपके पास होता है 360। 360 डिवाइडेड बाई 3 देखते हैं 120 आता है, तो cos 120 would be equal to -1 by 2. Here you will get -1 by 2 plus iota would be equal to square root of 3 divided by 2. So you can see that it's 2 common in these both, so you will take it out. Okay, and you will be left with -1 plus iota square root of 3. 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. Okay, so here we will be have 2 -1 plus iota square root of 3. Okay, so now I will multiply this 2 with the numbers in the parentheses. -2 plus 2 square root of 3 and iota.
Okay, so this would be the answer. For this part number 10, 7 into square root of 2, and this is the angle 5. 5 multiplied by 180, 900, and 900 is going to be divided with the 4, and you will have 225. Okay, so this is 7 into square root of 2, and you will have cos 225 plus iota sine 225. Okay, now we will check the angle with the cos, and you will have minus square root of 2 divided by 2 plus iota. Now with the sine, sine sine 225, sine 225 will give you minus square root of 2 divided by 2. Okay, now we'll take this square root of 2 divided by 2 common, because it is involved in both of the terms, so we will be left with minus 1 here and minus square root of 2i or iota here. Okay, now this square root of 2 and this square root of 2 will be written as square root of 2 square ऐसे, ठीक है, and then further square root and square will be cancelled, so we'll be left with 2. तो इन दोनों की जगह हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर वो 2 इस 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा. This 2 and 2 will be cancelled. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब हमारे पास 7 है और 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, सो वी विल हैव -7 square root of 2i. Okay, so we have part number 11 as 10 into square root of 2, and in the parentheses we will have cos 7 pi by 4 plus iota sin 7 pi by 4. ठीक है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 7 multiplied by 180 is 1260, and it is divided by 4 and you will get 315. सही, तो ये हो जाएगा cos 315 plus iota sin 315. जी, तो cos 315 आपको क्या देगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, और sin 315 आपको क्या देगा, माइनस square root of 2 divided by 2. Now this square root of 2 and this square root of 2 can be written as square root of 2 square, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, and then it will be cancelled and we will be having 2. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 into 2 divided by 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 minus iota. ठीक है, तो 2 and 2 are cancelled and here only 10 is left, so we will multiply this 10 with this. Okay, so this is 10 minus 10 iota. Part number 12, 2 into cos 5 pi by 2 sin 5 pi by 2. 5 multiplied by 180 will give you 900, and it is divided by 2, then it will give you 450. ठीक हो गया. अब हम cos 450 देखते हैं क्या है, वो आपको 0 दे देगा, और sin 450 चेक करें, वो आपको दे देगा 1. ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 iota. क्यों, क्योंकि 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आयोटा आ जाएगा, और आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 iota इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 12. So we have part number 13, 1 by square root of 2 cos pi by 4 plus iota sin pi by 4. We know that pi by 4 is always equal to 45. So we will check the answers for cos 45 and sin 45. Cos 45 is always equal to square root of 2 divided by 2, and sin 45 again square root of 2 divided by 2. This is 1 by square root of 2. ठीक हो गया. अब इसमें से आप square root of 2 divided by 2 कॉमन ले लें, we will be left with 1 plus iota in the parenthesis. This would be cancelled.
ठीक है, और आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब 2 को जो है वो आपने डिवाइड कर देना है सेपरेटली इन दोनों के नीचे अगर आप चाहते हैं तो। दिस वुड बी 1/2 एंड दिस वुड बी iota by 2 और you can write 1/2 iota। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 13 का आपके पास आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 14 है 7 इंटू कॉस 180 प्लस आयोटा साइन 180। ओके, सो कॉस 180 इज इक्वल टू -1 और हमारे पास जी साइन आ गया है साइन 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस केस में हमारे पास इमेजनरी पार्ट 0 हो गया और रियल पार्ट हमारे पास -7 हो गया। 7 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -7। 2 इंटू ई पावर आयोटा इंटू π/4। आपको पता है कि ये आयलर्स रूल के अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंटेशन होती है कॉज और साइन की। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। आपको पता है cos π/4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 whereas sin π/4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 अगेन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसमें से कॉमन ले लेना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि वो दोनों टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, तो यू विल बी लेफ्ट विथ, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 और यहाँ पे आपके पास आयोटा बच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 बच जाएगा। इसको यूँ भी लिख सकते हैं और अगर आप इसकी सेकंड रिप्रेजेंटेशन चाहते हो तो आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, दोनों राइट है जी। पार्ट नंबर 16 आपके पास है स्टूडेंट्स 3 इंटू ई पावर आयोटा π/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करें, ये cos π/2 है प्लस आयोटा साइन π/2। ठीक हो गया। अब आप चेक करें कि cos 90 आपको क्या देता है और उसके बाद आप चेक करें कि साइन 90 आपको क्या देता है। cos 90 आपको 0 देता है और साइन 90 आपको 1 दे देता है, ऐसा ही है। और यहाँ पर आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 0 इज़ 0, 3 इंटू 1 और 3 इंटू आयोटा आपको दे देगा 3 आयोटा एज एन आंसर जी। तो 5 इंटू ई पावर आई π/3 आपके पास है लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन और इसमें जी आपके पास होगा क्या कि ये तो 5 आप बाहर लिख लेंगे और cos π/3 मतलब 60 के इक्वल होता है ये, और यहाँ पर साइन 60 लिख लेंगे। कैसे 60 के इक्वल होता है, क्योंकि पाई हमेशा 180 के इक्वल होता है और 180 डिवाइडेड बाय 3 आपको क्या देता है 60। तो इंस्टेड ऑफ π/3 आई रोट 60। ठीक है, अब आप चेक करें cos 60 आपको क्या देता है, वो 1/2 आपको देता है और साइन 60 चेक करें, साइन 60 आपको देता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें और यू विल बी लेफ्ट विद 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट नंबर 17 का हो जाएगा आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट्स में इफ़ यू नो द वैल्यूज़, इफ़ यू लर्नड इट, तो तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने वैल्यूज़ को लर्न नहीं किया और आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, देन यू हैव टू यूज़ द साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम विद इन सेकेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज convert in Cartesian form. You have to convert, we have 6 parts and you have to convert them all into Cartesian form. अच्छा, Cartesian form क्या होती है, x plus iota y की form जो होती है उसे Cartesian form कहते हैं, उसे आप rectangular form भी कह सकते हैं, algebraic form भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास है argument of z minus 1 equals to minus π/4। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे कार्टेशियन फॉर्म में जी। सबसे पहले आपने इंस्टेड ऑफ जी आपने x प्लस आयोटा वाई लिख लेना है। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपने जो है वो सेपरेट कर देना है।
ठीक हो गया। अब जबकि आपने रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया है, अब आपने इस पे आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला लगाना है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास क्या था? टेंजेंट इनवर्स y बाय x, ये आपके पास फॉर्मूला था जिसमें मॉड b इन्वॉल्व था। ठीक है, मॉड क्यों? क्योंकि y और x की वैल्यूज़ को पॉजिटिव करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेंजेंट इनवर्स हमें क्या देगा। टेंजेंट इनवर्स y, यहाँ पर y की जगह यानी कि इमेजनरी पार्ट की जगह y ही है और x की जगह पर x माइनस 1 है। ठीक है, हमने मॉड नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं, सो वी डोंट नीड मॉड। यहाँ पे -π/4 होगा। अब हमने इस टेंजेंट को इस साइड पे ट्रांसफ़र कर देना है। वी विल बी लेफ्ट विद y x माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट -π/4। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास होगा टेंजेंट -π/4 जी। यहाँ पर हमारे पास है टेंजेंट, यहाँ पे -180 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास इक्वल होता है -1 के। अब हम क्या करेंगे, हम x माइनस 1 को, ये जो डिनोमिनेटर में इसे इधर ले जाएंगे तो ये न्यूमिनेटर में शिफ्ट होके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें क्या देगा? -x माइनस इंटू माइनस इज +1। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी या इक्वेशन क्या आ जाएगी? x प्लस वाई इक्वल्स 1 हमारे पास हो जाएगा जी आंसर इस पार्ट नंबर 1 के लिए। ठीक है, ये जो -x है ये मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हमारे पास +x हो गया। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 4 मॉड ऑफ e पावर आयोटा थीटा। तो z की जगह हम लिख लेते हैं x प्लस आयोटा y और z बार यानी z कॉन्जुगेट की जगह हम लिख लेते हैं x माइनस आयोटा y। 4 इंटू मॉड ऑफ ई पावर आयोटा थीटा का मतलब है कि ये ऑयलर्स प्रॉपर्टी है या ऑयलर्स रूल है, जिसको हम यूँ लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं या हम देख सकते हैं कि a प्लस बी एंड a माइनस बी ऑलवेज विल गिव यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो वी विल अप्लाई दैट फॉर्मूला हियर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर formula, and on this side as we know that mod is like having the formula, जब भी mod होता है तो आप फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखें हम इसको फर्दर कैसे करेंगे, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस माइनस हो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो this is the equation for part number 2. We have part number 3 as minus pi by 3 less than equal to argument of z minus 4 less than equals to pi by 3. आपको पता है कि argument के लिए हमारे पास हमेशा ये वाला फॉर्मूला होता है tangent inverse and mod of y by x। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, -π/3 इधर लिखेंगे, आर्गूमेंट का साइन पुट करेंगे और z की जगह पर हम अगेन x प्लस आयोटा y लिख लेंगे क्योंकि z की वैल्यू हमने यही सपोज की है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में -π/3 लिखेंगे और आर्गूमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि x माइनस 4 रियल पार्ट है और y जो है वो आपके पास इमेजनरी पार्ट है। अब हम लगाते हैं इस पर टेंजेंट इनवर्स y यानी कि इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट हमारे पास सिर्फ ये y है, इसको वो लिख लेते हैं और जो रियल पार्ट है वो x माइनस 4 है तो हम यहाँ पे x माइनस 4 लिख लेंगे और मॉड नहीं लगा रहे क्योंकि बोथ ऑफ द वैल्यूज आर पॉजिटिव। ठीक है, अब हम ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब हमने टेंजेंट मल्टीप्लाई कर देना है इस होल इनइक्वालिटी के साथ। तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट -π/3 लेस देन इक्वल टू y/x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू टेंजेंट π/3। ठीक हो गया,
तो ये जो है हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगी। अब आप देख लें कि टेंजेंट माइनस पाई बाई 3 किसके इक्वल होता है। आपको पता है कि पाई बाई 3 जो है वो इक्वल होता है 60 के, ठीक है। तो टेंजेंट माइनस 60 आपको क्या देगा आंसर में, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 3 आपको आंसर देगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 4 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हम z की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं x प्लस आयोटा y माइनस 4, in the denominator we will have 1 plus iota less than equal to pi by 6. After putting this value x plus iota y, now we will try to rationalize this 1 plus iota. और इसको कैसे रेशनलाइज करते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे रियल पार्ट को और इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं। अब देखिए मैं 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर जी आपके पास आ जाएगा आर्ग्यूमेंट, ये 1 माइनस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब माइनस आयोटा करते हैं तो माइनस एक्स आयोटा हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आयोटा हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर वाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो ये फॉर्म क्या बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया। अब फर्दर देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। हमारे पास यहाँ पर x माइनस 4 प्लस आयोटा y माइनस एक्स आयोटा प्लस 4 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y। डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर अगेन माइनस 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे देखें, मैं चेक कर रही हूँ कोई वैल्यू जो हमारे पास कैंसिल आउट हो चुकी है, नहीं। तो अब रियल पार्ट्स को अलहदा और इमेजनरी को अलहदा, x माइनस 4 रियल है, फिर y जो है वो रियल है, और इन तीनों में से आयोटा कॉमन ले लें, तो यहाँ पे y माइनस एक्स प्लस 4 ये आपके पास बच जाएगा। 1 प्लस 1 आपके पास 2 आ जाएगा, पाई बाय 6, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें फर्दर हम इसको कैसे कर सकते हैं जी। अब हम इसको ये करेंगे कि हम ये जो 2 है इसको अलग अलग स्प्लिट कर देंगे, x माइनस 4 प्लस वाई के अंडर भी, और इधर भी y माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो गया। अब हम आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जो कि टेंजेंट इनवर्स, पहले y मतलब पहले इमेजनरी, y माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 whole is going to be divided by x minus 4 plus y divided by 2. This is less than equal to pi by 6, ठीक हो गया, ये हो गया। अब आगे हमारे पास ये होगा कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे होगा y माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 प्लस वाई लेस देन इक्वल टू पाई बाई 6, एंड हियर इट इज़ 0, ठीक। अब हमने इस टेंजेंट इनवर्स को यहाँ से ख़त्म करना है, जिसके लिए हमने टेंजेंट को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी इनइक्वालिटी के साथ। यहाँ हो जाएगा टेंजेंट 0, यहाँ हो जाएगा, ज़ाहिर है टेंजेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स दोनों ख़त्म। x माइनस 4 प्लस वाई, यहाँ फिर से टेंजेंट
π/6। तो आप देख सकते हैं कि टेंजेंट ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो हमेशा। ठीक, तो हम इसको लिख लेंगे ज़ीरो, और यहाँ पर हमारे पास ये वाली टर्म एज इट इज़, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 180 डिवाइडेड बाय 6, जो कि हमारे पास होता है हमेशा 30 के इक्वल। तो टेंजेंट 30 आपको क्या देता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/√3, क्योंकि ये जो 3 है ये मैं आपको बताती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल होता है। कैसे, क्योंकि ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बन जाता है, ये यहाँ से इन दोनों को कैंसिल करें तो आपके पास 3 ही आंसर आता है। तो 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब हम इस 3 को इस तरह से लिखेंगे तो एक तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, जो दूसरा होगा वो रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा, ऐसे 1/√3 इस तरह से रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जी इसका आंसर आ गया, क्योंकि उन्होंने आपको कहा था कि आपने इसे कार्टेशियन फॉर्म में यानी x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना है। तो ये जी आपके पास आ गया। अब आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि x-4 प्लस वाई को दोनों साइड्स पे, इन दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द आंसर फॉर पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z इक्वल्स टू π/4। सबसे पहले हमने z की जगह x प्लस आयोटा y पुट करना है। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट है वो अंदर यूज हो रही है, इसलिए स्क्वायर बाहर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, आयोटा x आयोटा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इधर आयोटा स्क्वायर बाय y एंड y हो जाएगा। यहाँ देखें 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा y, ठीक हो गया, π/4। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। ठीक हो गया। अब हम आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला भी इस पे लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम लोगों को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। 1 प्लस वाई आपके पास रियल पार्ट और एक्स माइनस एक्स आयोटा आपके पास इमेजिनरी। यहाँ पे देखें आपके पास है 1 माइनस एक्स रियल पार्ट और माइनस आयोटा वाई इमेजिनरी। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट आता है कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि इमेजनरी जो पार्ट होता है उसके साथ हमेशा साइन चेंज हो जाता है जब भी आप रैशनलाइज कर रहे हों, इक्वल्स टू π/4। अब हम करते हैं इसको जी, आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। अब 1 के साथ जब ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो देयर वुड बी नो चेंज, यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। ये चूंकि प्लस है तो प्लस कभी भी साइन का कोई भी डिफरेंस नहीं रखता, तो इनके साइंस जो हैं वो सेम होंगे, लेकिन y जो है वो इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहली टर्म y हो जाएगी, सेकंड टर्म माइनस एक्स वाई, और थर्ड टर्म आयोटा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड माइनस एक्स आयोटा को हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली टर्म माइनस एक्स आयोटा, सेकेंड टर्म माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस एक्स स्क्वायर आयोटा, थर्ड टर्म प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स वाई, क्योंकि यहाँ भी आयोटा है और यहाँ भी। डिनोमिनेटर में चलते हैं, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स दोनों के साथ मौजूद है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये ए है और ये बी है। ठीक है, यहाँ पे भी ये ए है और ये बी है, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स π/4। ठीक हो गया, नेक्स्ट चेक देखते हैं आगे क्या है जी। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इफ़ एनी ऑफ द टर्म्स आर गोइंग टू बी कैंसल्ड और नॉट। हम इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करते हैं। 1 माइनस एक्स, मैं सिर्फ रियल वैल्यूज अब पहले लिख रही हूँ, प्लस वाई माइनस एक्स वाई
Now this one is iota, this one is having iota, this one is having iota square जो है वो तो रियल पार्ट बन जाता है क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो वो रियल पार्ट। वैसे भी ये देखें कैंसिल होगी टर्म्स। अब हम आयोटा वाली टर्म्स लिख लेते हैं। आयोटा टेकिंग आयोटा कॉमन, इधर y बच जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये चार टर्म्स जो हमारे पास आएंगी ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, आयोटा। दिस होल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये पाई बाय 4। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास देखें क्या बचता है, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, इसके नीचे भी हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो टर्म है आयोटा वाली इसके लिए भी हमारे पास नीचे वही टर्म आ जाएगी। इसको हमने स्प्लिट कर दिया इन दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के नीचे। क्यों क्या, अब देखें, we'll have, now we will not apply this argument, we will directly apply the tangent inverse जी। तो पहले लिखेंगे y की जो टर्म है वो ये है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। और अब हम लिखते हैं रियल पार्ट, ये 1 minus x plus y, the whole is going to be divided by 1 minus x whole square plus y square। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, और हमारे पास क्या बच जाएगा, टेंजेंट इनवर्स को हम इस साइड पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास y प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, द होल इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ये बच जाएगा। टेंजेंट को मल्टीप्लाई कर दें तो ये पाई बाय 4 के साथ, तो टेंजेंट पाई बाय 4 देखते हैं क्या होता है, 180 डिवाइडेड बाय 4 आपको 45 देगा, टेंजेंट 45 आपको देगा 1। ठीक है, टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1। अब हम इस पूरे को जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको जब हम उधर लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास y प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब हम 1 के अलावा सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं। प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड देन यू विल हैव y and minus y will be cancelled and you will be left with y square x square plus y square, और इस 1 को अगर मैं इधर लेकर आती हूँ तो ये हो जाएगा -1 equals 0। So this would be the form for part number 5। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। ठीक है, 2 आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आयोटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 माइनस 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आयोटा। सबसे पहले इसमें करना क्या है कि हमने इस पूरी वैल्यू को इस साइड पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमने इस पूरी वैल्यू को इस साइड पे शिफ्ट किया और ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब हम 1/2 इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, अब हम लोगों ने इसके ऊपर आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लगानी है और वो ये कहती है कि सिंस, यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 इक्वल्स आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2। सो अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी है होल्ड करती है इसलिए हम इन दोनों को भी कंबाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है,
ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक के ऊपर आर्गुमेंट है और दूसरे के ऊपर आर्गुमेंट है तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. So we are going to do that. We'll have argument of z minus 1 into z minus iota into z plus iota according to this property. अब हम इसको कंबाइन करते हैं. a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है जो कि हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा z स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इज -1 सो माइनस माइनस इज +1. जी अब हम यहाँ पर लगाएंगे z की वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, जो कि क्या है x प्लस आयोटा y एंड हियर इज गोइंग टू बी स्क्वायर ऑन इट. यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई आयोटा प्लस 1. यहाँ पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर इज विल बी टर्न इनटू माइनस वाई स्क्वायर, पर अभी उसको नहीं लिख रही. अभी सिर्फ मैंने इसको और इसको लिखा है और बल्कि इसको भी लिख ही लेते हैं. माइनस वाई स्क्वायर, ये तीनों हमारे पास रियल पार्ट्स हो गए और ये हमारे पास हो गया इमेजनरी पार्ट. ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं. फॉर्मूला क्या है टेंजेंट इनवर्स y by xy means the imaginary part, so here we are having 2xy as an imaginary part and for the real part we will write x square minus y square plus 1. here we will have pi by 3. ठीक हो गया. अब हमने नेक्स्ट स्टेप में 2 को इस साइड पे ट्रांसफ़र कर देना है. ठीक है, अब हमने इस 2 को इस साइड पे ट्रांसफ़र करना है और हमारे पास क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, और जब 2 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा वो 2 पाई बाय 3 बन जाएगा. ठीक है, अब हमने दोनों साइड्स को टेंजेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है. अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा एंड वी वांट टू मेक दिस दैट वे. ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास आ गया टेंजेंट 2 पाई बाय 3. 2 पाई बेसिकली इक्वल होता है cos 360 के, नॉट cos 360, 360 के इक्वल होता है. 360 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 120. तो टेंजेंट 120 चेक करते हैं, वो हमारे पास होता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. ठीक हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 2xy और यहाँ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे साथ पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 के साथ. ठीक है, लाइक दिस. इस पूरी नेगेटिव वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करके इसको पॉजिटिव बना लेंगे और हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy इक्वल्स 0. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन एम्पलीट्यूड इज 0.004 मिलीमीटर एंड एंगल इज पाई बाय 4. ठीक है, हमने एक पार्टिकल की पोजीशन जो है वो कैलकुलेट करनी है और उसका जो एम्पलीट्यूड है यानी कि जो उसका मैक्सिमम जो उसकी रीच है वो है 0.004 और उसका जो एंगल है वो पाई बाय 4 है. तो ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना. हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला मौजूद है जो कि है x इक्वल्स टू x मैक्सिमम इंटू ई पावर आयोटा थीटा. अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास x मैक्सिमम क्या है 0.004. ठीक है, और हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करें, थीटा की जगह पर पाई बाय 4 आ जाएगा. ठीक है, और अब यहाँ पे लिखे हैं 0.004 और हमें पता है कि ये आयलर्स रूल के अकॉर्डिंगली किसके इक्वल होता है कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4.
इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इसकी वैल्यूज 180 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि पाई जो है वो 180 के इक्वल होता है, तो 45 आ गया। तो हम cos 45 और sin 45 की वैल्यूज इसमें कंसिडर करेंगे। cos जो है वो 45 पे हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 दे देता है, जबकि sin हमें 45 पे क्या देता है, साइन और कॉस दोनों जो है वो हमें पाई बाय 4 पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 दे देते हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा अगर हम इसे कॉमन ले लें। तो अगर हम इसको कॉमन ले लें और इसे हम मल्टीप्लाई कर दें 0.004 के साथ, तो हमारे पास देखिए हम इसको ऐसे करते हैं 0.004 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास 2 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डबल टाइम्स के इक्वल होता है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम 0.004 के साथ भी एक काम कर सकते हैं, जैसे पॉइंट चला जाएगा तो नीचे 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने इसके साथ ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 4/1000 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 4/1000 के इक्वल। तो 4/1000 आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे बहुत ईजीली आपको आंसर दे देगा। यहाँ पे देखें, इसको प्रेस करें, ऊपर आप 4 लिखें, नीचे आप जो है वो 1000 लिखें, 1 2 3, और देखें आंसर क्या आ रहा है 1/250। आपके पास क्या आंसर आ रहा है 1/250। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 प्लस आयोटा आपके पास आ गया। अगर आपकी बुक में पीछे आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 500, तो वो भी जो है लेकर आना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इस स्टेप में इस 2 को ऐसे ही रहने दें तो आपके पास आ सकता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऊपर आ सकता है और नीचे आप 2 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं मैं वो वाला आंसर करवाऊँ तो यहाँ पे देखिएगा जी, यहाँ से अगर आप कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला स्टेप, इसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया 4 डिवाइडेड बाय 1000 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 को नहीं छेड़ा, इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने 4/1000 को हम इसे 1/250 लिख लेते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 252 से मल्टीप्लाई होकर आपको दे देगा 500। तो ये आपके पास एज इट इज़ द सेम एज द बुक आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 2 आपके पास है कि जब आपके पास एंगल π/3 हो तब आपके पास जो है वो क्या आंसर्स आएंगे। अब एंगल अगर आपके पास π/3 है और आपके पास फॉर्मूला वही है x इक्वल्स टू एक्स मैक्सिमम इंटू ई पावर उल्टा थीटा, तो आपको जस्ट क्या करना है एंगल चेंज करना है, बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी। एक्स मैक्सिमम आपके पास 0.004 आएगा, और यहाँ पर आपके पास कॉस π/3 आ जाएगा प्लस आयोटा साइन π/3 आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा इसको कर लेते हैं एक्स मैक्सिमम इंटू ई पावर आयोटा π/3। ठीक है, ये वाला स्टेप होगा, उसके बाद ये वाला स्टेप हो जाएगा, और अगेन उसके बाद आपके पास जी क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि पॉइंट हट गया और नीचे आपके पास पॉइंट की जगह पे 1 और फिर जितने नंबर्स हों उतने ज़ीरोज़ लग जाते हैं। π/3 आपके पास होता है 180 डिवाइडेड बाय 3, जो कि होता है 60 के इक्वल। तो cos 60 आपको देता है 1/2, और sin 60 आपको क्या देता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 आप इसमें से कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और जब बल्कि इसको हम 1/250 भी लिख सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1s are 4 और 4 25s are 100, तो ये 250 हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ, अंदर इसमें ले जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/500। ठीक है, क्यों, क्योंकि 250 मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ। यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3।
ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 3 चेक करते हैं। जी, पार्ट नंबर 3 में आपके पास जो एंगल है वो π/6 है। ठीक है, एंगल इज π/6। उसमें भी आपके पास यही होगा, लेकिन π/3 की जगह आप π/6 लिख लो। और आपको पता है कि π/6 इक्वल्स टू 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4/1000। ठीक है, इस चीज़ को हमने लिख लिया 4/1000 और cos 30 डिग्री प्लस अयोटा साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1/250 आ जाएगा। cos 30 आपको क्या देता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, और साइन 30 आपको क्या देता है 1/2, 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, तो जब आप 2 कॉमन लेंगे और 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1/500 आपको दे देगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो ये जी आपका आंसर हो गया पार्ट नंबर 3 के लिए। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 तो हमारा डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वो ये बता रहा है कि हमारा जो पार्टिकल है वो पहले जो है वो इस पोजीशन पे था, देन उसने जो है मैक्सिमम जितना उसने कवर किया वो है 1+4 आयोटा, और आपने कैलकुलेट करना है एंगल एट t इक्वल्स टू 0, और उसके बाद आपने पोजीशन ऑफ द पार्टिकल भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये इसका बेसिक है जो हमें गिवन है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सबसे पहले थीटा कैलकुलेट करना है। तो हम इनका जो बेसिकली हमें फार्मूला गिवन है वो हम यूज़ करते हैं, जो कि है x इक्वल्स टू x मैक्सिमम, ठीक है, e पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो इसमें x जो है वो हमारे पास जो गिवन है वो है 2+3 आयोटा, और x मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो है 1+4 आयोटा। ठीक है, और e पावर आयोटा थीटा, ई पावर आयोटा थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये ऑलरेडी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं 1-4 आयोटा के साथ। ठीक, अब हम देखते हैं कि 1 के साथ जब ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो वो वही 1 वापस आ जाएगा। ठीक है, और अब 2 इंटू 4 इज़ 8 आयोटा, एंड 3 इंटू 4 इज़ 12 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा दोनों के साथ है तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें, ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, ये अगेन वापस आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर इस साइन को पॉजिटिव कर देगा, 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 14, और 3 आयोटा माइनस 8 आयोटा क्या हो जाएगा -5 आयोटा। डिनोमिनेटर में देखें ये होगा 1, यहाँ पे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 4 स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर फिर से इस साइन को पॉजिटिव कर देगा, और 4 स्क्वायर आपको क्या देगा 16। ठीक है, इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक, अब हमने क्या करना है, 16 प्लस 1 हमारे पास क्या होता है 17, तो हमने इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके लिख देना है 14/17 -5 आयोटा बाय 17। अब हम रियल और इमेजनरी पार्ट्स को अलग अलग कंपेयर करते हैं। रियल पार्ट में हमारे पास क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू 14/17। ठीक है, और साइन थीटा हमारे पास क्या आ रहा है जी -5/17। ठीक हो गया। अब हमने चूंकि हमने एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको टेंजेंट की फॉर्म देंगे, और टेंजेंट थीटा हमें पता है साइन बाय कॉस के इक्वल होता है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू -5/17 ओवर 14/17। 17 और 17 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -5/14। अब हम साइन बाय कॉस को टेंजेंट लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे -5/14। अब हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स -5/14, ये हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा।
सही है। अब देखते हैं आगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने x फाइंड आउट करना है। तो x, नाउ वी विल फाइंड x as they have told us that find out the position of the particle। तो उसके लिए x मैक्सिमम जो है वो हमारे पास g गिवन है, वो है 1 + 4 आयोटा। उसको पुट करते हैं, ठीक है। और e पावर आयोटा थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक हो गया। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं जो कि हमारे पास हैं। cos थीटा और साइन थीटा की जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो ये हैं। cos थीटा हमारे पास गिवन है, आप देख सकते हैं 14/17 एंड sin थीटा -5/17। सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट इट हियर। यहाँ पे 14/17 पुट करें और यहाँ पे आयोटा -5/17। ठीक हो गया। चलिए जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 14/17 और यहाँ पे -5/17 आयोटा आ जाएगा। वेयर एज जब हम इसे 4 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 56 प्लस 56 आयोटा बाय 17 प्लस माइनस माइनस 4 × 5 इज़ 20 आयोटा स्क्वायर बाय 17। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर साइन को पॉजिटिव कर देगा तो 20 + 14 आपके पास क्या हो जाएगा 34/17। और यहाँ पे 56 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 51/17 आयोटा। ठीक है। तो ये आपके पास पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा। लेकिन देखते हैं कि अगर हम इसे फर्दर डिवाइड कर सकें, 34/17 आपको दे देगा 2, वेर एज 51/17 आपको क्या दे देगा 3। ठीक है, ये आपको 3 दे देगा। तो 2 + 3 आयोटा जी आपका पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है। फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x = x मैक्सिमम e पावर आयोटा थीटा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग थीटा के लिए जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो है ओमेगा × t। ठीक है। अब हमें पता है कि ओमेगा जो है वो 2π और f इसके इक्वल होता है, तो हम इसे बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2π/ft। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम इसे यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। x मैक्सिमम 1 + 4 आयोटा e पावर आयोटा इंटू 2π/ft। x हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा। अब हम इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास 1 + 4 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं cos 2π/ft। ठीक है, प्लस आयोटा साइन 2π/ft। ठीक हो गया। आयलर्स आइडेंटिटी हमने इस पे लगा दी जी। अब हमें पता है टाइमिंग्स भी उन्होंने हमें दे दिए। टाइम क्या है 2, यहाँ पे भी 2 पुट करें, यहाँ पे भी 2, तो 2 × 2 इज़ 4। तो ये कुछ यूँ हो जाएगा 4π/f आयोटा साइन 4π/f। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इसको हम पहले ही क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 1 में रैशनलाइज कर चुके हैं और वहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी वो हम देख लेते हैं एक दफ़ा। लेट मी चेक इट जी। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी यहाँ पे रैशनलाइज आफ्टर रैशनलाइजिंग, ये है cos थीटा = 14/17 है और sin थीटा = -5/17 है। तो इसको हम देख लेते हैं। 14/17 -5/17 आयोटा, ये हमारे पास इसको रैशनलाइज करने के बाद वैल्यूज़ आ रही थी। ठीक है, मैंने डायरेक्ट पुट कर दी हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को पहले कंपेयर करते हैं। देखें हमारे पास रियल पार्ट क्या है, cos 4π/f = 14/17 और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है sin 4π/f = -5/17। ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं,
हमको चाहिए एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो इसके लिए हम डिवाइड कर लेते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे साइन बाय कॉस को, तो ये साइन 4 पाई एफ डिवाइडेड बाय कॉस 4 पाई एफ बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा -5/17 डिवाइडेड बाय 14/17, ये कट आउट हो जाएगा, यहाँ पे -5/14 आ जाएगा। ठीक है, और साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है? टेन के। ठीक है, ये टेंजेंट के इक्वल हो गया। अब आफ्टर दिस वी हैव टू पुट दिस टेन हियर, इसको हम टेंजेंट को इधर ले जाएंगे, ये हमारे पास -5/14 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा एज एन इनवर्स। जी, अब हम 4 पाई को भी उस साइड पे ले जाएंगे और हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, 4 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एंड व्हेन इट गोज हियर इट विल टर्न इनटू डिवाइड। ओके, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द एम्पीडेंस Z फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट्स हैं और वो ये कह रहा है कि आपने एम्पीडेंस फाइंड करनी है जो कि Z से डिनोट होती है। हमारे पास बेसिकली फार्मूला ये है E = ZI। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। चूँकि हमारे पास E और I गिवन है और हमने Z फाइंड करना है, तो हम इसको कुछ यूँ ट्रांसफ़र करते हैं, Z = E डिवाइडेड बाय I। ये जो I है ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब इस फॉर्मूला में हमने पुट करनी है वैल्यूज़। अगर हम E = -50 + 100 आयोटा डिवाइडेड बाय I -6 - 2I ये पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक दिस 50 आउट। ओके, -50, we'll take this out as a common number and we will be left with 1 here, and since 50 into 2 is 100, so we will write 2 iota here. Okay, from the denominator we will take -2 common and then we will be left with 3 here क्योंकि 2 3 6 होता है, और we will be left with only iota with a positive sign। क्योंकि माइनस तो चला गया बाहर, तो फिर पीछे क्या रह गया, प्लस। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हम इस माइनस को इस माइनस के साथ कैंसिल कर देते हैं। 2 × 1 is 2 and 2 2s are 4 and 2 5s are 10, तो 2 × 25 जो है वो 50 दे देता है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ देखिएगा कि हम यहाँ पे लिखते हैं 25 1 + 2 iota and whole is going to be divided by 3 + iota। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज का मतलब ये होता है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद द डिनोमिनेटर बट with the opposite sign. If there is 3 + iota, we have to multiply and divide with 3 - iota। ठीक हो गया। अब देखें इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम 3 - iota लिख लेते हैं। अब हम 2 iota को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 iota। ठीक है, और 2 iota को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा 2 iota स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास a + b a - b की फॉर्म बन रही है। हमें पता है कि a + b into a - b always equals to a square - b square। तो हम 3 square लिख लेते हैं minus iota square। ओके, दिस इज हाउ we'll write it। ओके, फर्दर देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। जी, iota square हमें always -1 देता है, तो minus into minus will be plus, so that would be 2 and 2 + 3 is 5, so here we will write 5। 6 iota minus iota is 5 iota, so we will write 5 iota here। Iota square is always -1, minus is +1, so 3 into 3 is 9, 9 + 1 is 10, so here we will write 10। ओके, अब देखिए ये 5 दोनों टर्म्स रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट्स के साथ है, तो हम इस 5 को कॉमन ले लेते हैं। वी विल बी लेफ्ट विद 1 + iota हियर एंड 10।
5 into 1 is 5, 5 into 2 is 10. Okay, so here we'll be left with 25 by 2 into 1 plus iota. Okay, so this is the answer for the first part. Now the second part number 2 is E equals to 100 plus 10 iota volts, मतलब ये हमारे पास करंट है, and I equals to minus 8 plus 3 iota. ठीक है, अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, मतलब इन दोनों के लिए हम लोगों को Z चाहिए. Z equals to E divided by I, as we know. हम E की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं 100 plus 10 iota, and instead of I we will write minus 8 plus 3 iota. ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूमरेटर में से 10 कॉमन आ सकता है. 10 into 10 is 100, 10 into 1 is 10, so हम यहाँ पे iota लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में minus 8 plus 3 iota ही आएगा. ठीक हो गया. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं -8 -3 आयोटा के साथ, और हम डिवाइड भी करेंगे इसी नंबर के साथ इसे. ये हमारी रैशनलाइजेशन होगी. ठीक है, वी आर गोइंग टू रैशनलाइज इट जी. और अब यहाँ पे देखिएगा 10 तो कॉमन है, उसे हम बाहर ही लेने देंगे. 10 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले -80 हो जाएगा, फिर -30 आयोटा. अब हम आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आयोटा हो जाएगा और फिर -3 आयोटा स्क्वायर. In the denominator we have again a plus b and a minus b form, so we have to apply the formula -8 square minus 3 iota square. Okay, so here we can see there's -80. Okay, and iota square is -1, minus plus, -80 plus 3, -30 iota and -8 iota. It will be -38 iota. Okay, so in the denominator we are going to have minus whenever the power is even, so minus always turns into positive sign. 8 into 8 is 64. Their iota, this square will apply on these both. That would be 3 square is 9 and iota square is -1, so minus would be plus, and that would be 9. Okay, okay, this is how we'll do it. -80 plus 3, -80 and plus 3 will always give you -77. 64 plus 9 will give you 72. Now we are going to simplify this further, and we know this, that when we do this 10 divide by 72, it will give us 5 by 36. Okay, now further if you want to do it, you can do it. Multiply this 5 with these both. 77 multiplied by 5 will give you 385. Our final answer -385 divided by 36 minus With this question, we have ended exercise 1.4. Inshallah, in the next video, we'll meet up with the new chapter. एंड तब तक के लिए जहाँ रहें खुश रहें, शाद आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमें दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़. एंड yes, if you have any queries, please let me know in the comment section. Bye bye.